Hello, Yogesh. Hello, Srishti. We are waiting for others to join, then we'll start. Guys, can you see my screen? Yes, we can. Okay, I'm just waiting for others to join, and then we'll start. We'll wait for 1 more minute, guys, and then we'll start. Okay, guys, let's start. I can see that there are many less people, but still we will start. Today we'll discuss about Azure Backup. Before we start the topic, anyone has any questions No, on sir. storage, on topics which we discussed yesterday, or any topic which we have covered till today? Yes, I have a question actually, sir. So Yes, what's the Ganesh. difference between, I'm sorry, because I joined late yesterday. So I have a Mm-hmm. question. What's the difference between replica and
the backup, because see, as you mentioned yesterday कि अगर कोई malware attack होता है replica जो कुछ होता है तो obviously replica पे भी होता है, right? तो वो chances रहते हैं कि that data lost हो सकता है, लेकिन backup पे नहीं होता, correct? Right. तो फिर क्या use है replica रखने का actually? Fine, got it. Anyone else? कोई और question किसी का? Okay, if you guys do not have any questions, let's start. Talking about your question, Ganesh, ये आज वैसे ही आंसर हो जाएगा, काफी डिटेल में इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आपका क्वेश्चन वैसे ही आंसर हो जाएगा कि बैकअप क्या है और रेप्लिकेशन क्या है, राइट? Sure, sir. Thank you. So guys, before we start with Azure backup, I need to know or want to know, what do you guys understand by backup? What is your understanding? Remove Azure, forget cloud. What do you understand by the word backup? When you hear backup, what comes to your mind? Could you please define the backup, each one of you? A short description. We can start with Amit. What do you understand by backup? Not talking in terms of Azure, just a simple backup. It could be your phone's backup, it could be your laptop's backup, or any backup. What do you understand by backup? Yes, Amit. Amit, can you hear me? If you're talking, you're on mute. Sanmitra, can you hear me? Yes, I can. Sorry. Backup. What do you understand by backup? Not in terms of Azure, just the understanding of word backup. Backup is like making sure you take a copy of your data and you store it for future reference in case something happens to the current version of the data that you have. Fine. Yogesh bhai, backup. Same thing as Sanmitra told. We take the data or copy it to some other place, and in case of damage to the original data or settings, we can restore it. Fine. So I guess I'm presuming you guys have a fair knowledge of backup. In broader term, backup is backup in any way. It's not only in data, virtual machine, or technical. It could be monetary backup. It could be physical backup. It could be resource backup. For example, if we require 4 people in a team, we already hire 5 people. Why? We keep one as a backup. Right? So backup is a replacement for anything and everything. That is a backup. In this term, yes, your answers are correct. We are discussing about data and virtual machines backup. Okay. Still, before we move to Azure backup, we'll discuss few more things with related to backup, not in terms with Azure. So a backup, when I say backup, let me open one computer. This is a server. Just moving it to this screen so you guys can see it. This is a server, be it in Azure or on premises, anywhere. This is one server I have. Okay. Now I have some file on this server, let's say. Now this server has only 2 drives. Okay. My major data is being saved on desktop. Example, I'm saving all my files, my documents, whatever I'm working. I'm saving this on my, let's say I'm working into sales. Okay. So I have sales data. I'm saving it on my desktop. Just for the example, I'm saving it on desktop. वैसे कोई desktop पे save करता नहीं. Okay, this is today's data. Okay, I saved the data. This is my file. Everything is there. But now I have that fear that what if something happens to my data? This is very important data. कुछ हो जाए तो क्या मेरा computer बंद हो जाएगा? वैसे normally no one saves the data on local drive. Understand one thing, guys. This is just for an example. Okay, no one saves the data. Where do we save the data normally? If you are working on something, you have your official data. Where do you save your data? We have discussed In that OneDrive. already. Sorry, which drive?
We save data in OneDrive OneDrive. generally. Okay, OneDrive. Yes, that is also correct answer. But what is a OneDrive? OneDrive is just a product, right? Fine. Azure Cloud. Cloud is again a product. Method क्या है? Technology क्या है? There are only two types of location. One is a local location. Another one is Global. network location. One is local, which is there on your computer, on your laptop, that is your local. Anything which is attached to your laptop or your computer, that is local. For example, this disk, if I'm saving something on the desktop, where is it saving? Ultimately, desktop का data कहाँ save होता है? Anyone knows? ये desktop का data, ये save folder save कहाँ पर हुआ है? इसका actual location क्या है? For my easiness, it is on desktop, but where is it actually getting saved? C drive, users, the user from which I'm logged in this case tap out, and desktop. So ultimately ये कहाँ पर save हो रहा है? C drive में save हो रहा है. Now what is a C drive? C drive is a disk which is physically attached to your laptop, which means this is being saved locally. Is it clear till here? Yes. Anyone did not understand, has any doubt, please let me know. Guys, one more thing, and this doesn't apply to only today's session, for previous sessions also. Many practicals I have left where I asked you guys that should we do it, or will you guys practice at home? If you want, I will do it. So I'm not saying that just for the sake of it. If you really want me to do some practical, even if it is a small one, let me know, we will do that. And if you're saying, if you're taking that responsibility कि ठीक है इसको skip कर दो हम खुद कर लेंगे, make sure you practice, because if you do not do that, if you do not do the hands-on practice, interview में answers नहीं दे पाओगे. So if you're not comfortable, if you're not sure कि नहीं कर पाओगे, and when I'm asking कि do you want me to do it, छोटा भी practical हो, if you really want me to do it, let me know. I'm not saying that just for the sake of it, I'll do that practical. No matter एक छोटे topic को 3 sessions भी लग जाते हैं, still we will do that practical. And if you're taking responsibility कि नहीं leave it, we will do this at home, make sure to do that. That will really help you in your interviews. Okay, so this sales folder, when I save it on desktop, actually it is being saved in C drive. My C drive is on a disk which is physically attached to my laptop, which means this folder is being saved locally. So this is one method of saving data which we never ever use. हम लोग कभी भी use नहीं करते हैं. Live environment में इसमें कभी भी use नहीं होता. Local पे कोई save नहीं करने देता है. ठीक है, वहां से recovery बहुत difficult होती. What is the other method? The other method is to save your data in shared drive. Now, what is a shared drive? Can anyone explain? We have already discussed a shared drive. What is a shared drive? Yes, guys. Anyone? What is a shared drive? The drive which is accessible to all the teammates. And where is it saved? Is it on your local laptop? No, I think it's on cloud. Not necessary. See, it's not always cloud. When we did not have cloud 8 years back, we still had shared drive. लोकल ड्राइव क्या होता है ना, आपके लैपटॉप से अटैच है, आपका लैपटॉप चोरी हो गया, आपका ड्राइव भी उसके साथ चला गया. शेयर ड्राइव क्या है? आपके डेटा सेंटर में बहुत सारी बड़ी हार्ड डिस्क जो है वो पड़ी है. क्लाउड भी अल्टीमेटली, क्लाउड इज नथिंग बट समवन एल्सेस कंप्यूटर, राइट? आई कीप रिपीटिंग दिस जोक और दिस स्टेटमेंट. Take that seriously, so you will understand things. Forget that. Let's consider that we do not have cloud technology. Still, what happens here, that this is your data center. डेटा सेंटर मतलब आपका जो ऑन प्रीमाइसेस जो होता है ना, जहां पर भी ये होगा, वहां पर आपके काफी बड़े बड़े हार्ड डिस्क लगे होते हैं. टीबीज में, पेटाबाइट्स में, टेराबाइट्स में हार्ड डिस्क लगे होते हैं आपके इस तरह से. ओके, इनका बैकअप होता है, ये अपने आप में काफी सेफ होते हैं. यहाँ पर धूल में टीवी नहीं जाती. किसी को डेटा सेंटर में एंट्री भी करनी होती है तो दे वेयर दोस ग्लव्स, शूज उतारने पड़ते हैं. वहां के एक अलग से सॉक्स होते हैं. बहुत ही ज्यादा इसको कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखा जाता है ताकि हार्ड डिस्क जल्दी से क्रैश ना हो, कोई पानी वगैरह ना जाए, भीगे नहीं. सिक्योर एनवायरनमेंट होता है ताकि हैक ना हो. इसमें मल्टीपल बैकअप्स होते हैं ताकि लाइट्स वगैरह बार बार जाकर इसको डैमेज ना करे. तो कंपेयर टू योर लैपटॉप, इट इज वेरी सिक्योर. इट्स वेरी डिफिकल्ट कि कहीं पर कोई हार्ड डिस्क फेल हो जाए. और अगर फेल भी होती है, उसमें भी रेड वाला कॉन्सेप्ट, इफ यू गाइस रिमेंबर,
आई एक्सप्लेन्ड एक रेड का कॉन्सेप्ट होता है, रेड कॉन्सेप्ट में बैकअप कंटिन्यूस बनता रहता है। तो मतलब यूजिंग मल्टी मेथड्स दीज डिस्क दीज हार्ड डिस्क आर सेव्ड, और ये कहां पर रखी है, एक ऑन प्रीमाइसेस पे रखी है। एंड देन अदर यूजर्स फॉर यूजिंग देयर लैपटॉप्स हियर, यहाँ कोई सेल्स पर्सन है, कोई फील्ड पे है, कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, कोई ऑफिस में काम कर रहा है, कोई आईपैड यूज कर रहा है, कोई मोबाइल से काम कर रहा है, किसी भी तरह का काम कर रहा है, कंपनी कैन नॉट अलाउ देम टू यूज देयर ओन लैपटॉप। टू थिंग्स, एक तो डेटा की सिक्योरिटी नहीं होगी, सेकेंड चीज चोरी हो सकता है, लैपटॉप गुम सकता है, लैपटॉप जल सकता है, तो डेटा लॉस, सो लॉस और थेफ्ट दोनों की भी चांसेस ज्यादा होते हैं। सो व्हाट दे डू, दे आस्क देम टू have a drive on their folder on their laptop कि इसका जो यहाँ पर जो saved drive है, एक let's say इतनी बड़ी ड्राइव में से मैंने ये दो जो है सेल्स के लिए डेडिकेटेड रखा है, एंड ऑल दीज यूजर्स एट द लेफ्ट हैंड साइड जो आप देख रहे हो वो सपोज सेल्स के हैं। Post this, I have a question for you guys, a small question. I hope you guys will be able to answer. And this is I'm not explaining with regard to cloud. पहले भी ऐसा होता था, cloud से पहले भी। Okay, so these two sections I have blocked for sales. ये में भी admin team के हो सकते हैं, IT कुछ भी हो सकता है। ये दो sections जो है मैंने sales team के लिए block कर रखे हैं। So now I have given the path or something जिससे ये लोगों ने what they did, ये लोगों ने इस network drive को अपने इस पे map कर लिया। So now whenever they log into their laptop, they see a drive which looks like a network drive, but it is a shared drive, which looks like a local drive। इस तरह से दिखता है, इसी तरह से दिखता है, बट वो एक्चुअल में होता क्या है, नेटवर्क ड्राइव होता है। तो डेटा कहां पर सेव हो रहा है, यहाँ पर सेव हो रहा है डेटा, एवरीथिंग इज गेटिंग सेव्ड हियर, सब कुछ सेव यहाँ पर हो रहा है। तो इस केस में अगर किसी यूजर का जो है कोई लैपटॉप वगैरह चोरी हो जाता है या भीग जाता है पानी में, वॉट एवर हैपन्स, लेट्स से दिस लैपटॉप गेट्स स्टोलन और इट्स डैमेज, फायरवर्क कुछ भी हो जाए, दिस यूजर अगर इसका डेटा यहाँ पर होता तो लैपटॉप चोरी हो जाने पे सबसे ज्यादा एक तो मॉनिटरी नुकसान, उससे बड़ा डर कंपनी को होता है, इंश्योरेंस वगैरह होता है। सो कंपनीज आर नॉट वरीड अबाउट मनी, दे आर वरीड कि उनका कोई सेंसिटिव डेटा होगा, सेल्स लीड हो सकती है, कोई बड़ी लीड हो सकती है, वो किसी और के हाथ लग सकता है। ठीक है, वो एक फैक्टर है। सेकंड फैक्टर है कि इसने जितनी मेहनत की थी वो सारी वेस्ट हो गई। नाउ ही विल हैव टू कलेक्ट दैट डेटा अगेन। मे बी इसकी 6 महीने की मेहनत थी, उसके बाद एक डील जो है क्लोज हुई थी जिसका पूरे का पूरा कॉपी एग्रीमेंट वगैरह इसके पास था। टुमारो इफ दिस पर्सन गोज टू अ क्लाइंट एंड सेज कि 6 महीने से जो हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं वो फाइल जो मेरे लैपटॉप में थी एक्चुअली आई लॉस्ट इट, और हमको पूरा का पूरा प्रोसेस फिर से इनिशिएट करना होगा, वो क्लाइंट का पूरा ट्रस्ट जो है आपकी कंपनी पे, आपके प्रोडक्ट पे लूज हो जाएगा कि आपने ये इतनी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स, इतनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स नहीं संभाल पाए आप, मेरा प्रोडक्ट या मेरा डेटा नेक्स्ट इसमें आप नहीं संभाल पाओगे। एंड इवन इफ ही हैज दैट कॉन्फिडेंस ही विल नॉट गो अहेड बिकॉज आई डू नॉट हैव 6 months, he'll say that मैं आपके साथ पैरेलल किसी और कंपनी से भी डील कर रहा था, दे हैव माय डेटा, आई विल गो विद देम। सो मॉनिटरी नुकसान हो सकता है, लीड जनरेशन वाला नुकसान हो सकता है, एन नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर जो डेटा लॉस होने से हो सकते हैं और चोरी होने से हो सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड इफ डेटा वाज हियर ऑन सम ड्राइव, तो ये लैपटॉप चोरी होने से भी कुछ नहीं होता था। व्हाट दे विल डू सिंपली ब्लॉक दिस लैपटॉप, assign a new laptop to this user, and then again map, let's say this is a new laptop, again map this to the drive, और immediately उसको सारा जो डेटा गया था immediately सारा का सारा डेटा वापस आ गया, and he is ready to work। यहाँ पर रिसोर्स का टाइम वेस्ट हो रहा है, लीड्स जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें। Is it clear? Are you guys getting it? Why we do not save anything in live environment on our desktops? Is it clear? Why do we do that? Yeah. So end users are never saving their data. यहाँ पर मैं सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे टू गिव यू एन एग्जाम्पल कि हम इसको बैकअप को रिकवर कैसे करेंगे, बैकअप वगैरह कैसे लेंगे। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, रियल लाइफ में नहीं होता है। समटाइम्स पीपल डू इट, कभी कभार लोग कर लेते हैं कि यार वो नेटवर्क ड्राइव में नहीं जा पाया, मैंने डेस्कटॉप पे कर लिया था। समटाइम्स इट हैपेंस, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता है, कभी कभार यूजर्स करते हैं। एंड यूजर सबसे बड़ा लूप होल होता है सिक्योरिटी में, एंड यूजर्स कुछ भी कर सकते हैं। Okay, so this is the method. So if end users, if they do not save their data, तो why are we worried about backup? इतना हम बैकअप कर क्यों रहे हैं? So what are we talking about here? Backup, हम उन चीजों के बैकअप की बात कर रहे हैं। ये तो हमने एंड यूजर्स लैपटॉप्स की बात की, विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11। वी आर डिस्कसिंग बैकअप ऑफ माय सर्वर्स। सर्वर के भी डेस्कटॉप पे मैं कोई डेटा नहीं रखता हूँ, लेकिन सर्वर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, लेट्स से दिस इज माय सर्वर, इसके ऊपर मैंने एक वेबसाइट चला रखी है, इसके ऊपर मैंने एक फाइल स्टोरेज सर्वर बना रखा है, इस पे मैंने कोई वीपीएन सर्वर बना रखा है। इसमें डेटा नहीं है, बट इसका कॉन्फ़िगरेशन अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है कि ये अगर डाउन होगा, लेट्स से दिस इज माय वीपीएन सर्वर, नॉट डू नॉट कंपेयर दिस विद एज्योर वीपीएन, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज।
लेगेसी VPN अलग होता था, उसके लिए सर्वर लगता था पूरा. So if I have my VPN server, इस सर्वर के थ्रू मेरे 1000 यूजर्स जो है कनेक्ट हो रहे हैं, and suddenly if this server is down, तो what will happen? 1000 यूजर्स मेरे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे नेटवर्क को या उनके ड्राइव को या कहीं पर भी, and what will happen? 1000 लोगों को प्रोडक्टिविटी लॉस हो रहा है. So are you getting it कि किस तरह का इम्पैक्ट होता है? लेट्स से फ्लिपकार्ट की वेबसाइट इसके अंदर है, डेटाबेस तो फ्लिपकार्ट का भी कहीं और होगा, बट वेबसाइट इसके अंदर है और ये एक ही सर्वर है. अगेन ऐसे होता नहीं है. फ्लिपकार्ट जैसा ह्यूज प्लेयर, दे डू नॉट डील विथ वन सर्वर. बट स्टिल, फॉर एग्जांपल, लेट्स से दिस इज फ्लिपकार्ट और अ सिमिलर साइट लाइक फ्लिपकार्ट जो ठीक ठाक बिजनेस कर रहा है, बट सडनली कुछ हो गया, बहुत वायरल हो गया, एंड thousands of people came to know कि यार ये वेबसाइट ऐसी है, यहाँ पर मुझको जाना है, शॉपिंग करनी है, एंड देन सडनली दिस सर्वर इज डाउन और इसका कोई बैकअप वगैरह मेरे पास नहीं होता, मैं जिसको अप कर पाता, या किसी ने देख करके यार मैं सडनली ये बहुत वायरल हो गया और ही इज अर्निंग अ लॉट, तो किसी ने इसमें वायरस ये कर दिया, रैंसमवेयर टाइप के वायरस आते हैं जहां पे आपके पूरा सर्वर ब्लॉक कर देते हैं. ठीक? ऐसा कुछ हो गया. सो अनलेस यू हैव अ बैकअप यू विल नॉट बी एबल टू ओवरकम टू दोस इश्यूज, और अपना बिजनेस आप एज यूजुअल रन नहीं कर पाओगे और करोड़ों का नुकसान होगा. सो टू काउंटर विद दीज इश्यूज वी आर डीलिंग विद बैकअप, इसलिए बैकअप है, अदरवाइज एंड यूजर्स के लिए कोई खास बैकअप हमको लगता नहीं है. Clear till here, guys? Anyone has any questions? No. Clear to everyone? Ganesh, Juhi, Sanmitra, Yes. Srishti, Yogesh bhai, Yes, sir. clear? Yes. Fine. Before I start with the backup thing here, one quick question I wanted to ask you guys. Now I discussed about this network drive. ये मैंने अभी सिर्फ इसका बताया ऑन प्रेमाइसेस में कैसा होता है. We discussed storage. All of you were there, right? Storage में भी मैंने आप लोगों को एक नेटवर्क शेयर वाला बताया था. So which service is that? Now I am saying कि ये तो ऑन प्रेमाइसेस हो गया, ठीक है, but I am moving to cloud. मुझको अपने यूजर्स को, I don't want my users to save their data here on their laptop, and I don't even want to use my on premises वाला जो legacy hard disk वगैरह आता था. I don't want to use that. I want you to give me some solution, cloud based solution, where I can use this infrastructure, where I can use this method where my users are able to save files on some shared network. So which service will I use? Yeah, you're correct, Asher. File share. Correct. Can any one of you guide me quickly? How do I create a file share? It could be a collective effort also. Just quickly navigate me. Anyone? Srishti, could you guide me how to create a file share? I'm not able to recall it at the moment. So storage Yogesh? account. Sorry. Storage account. We have to first create the storage account inside that. Okay. First, let me check if I have a storage account. I have, but I don't want to play with this account, so I'll create a new one. Storage is very important topic, guys. Do not take it lightly. बहुत सारे questions इंटरव्यू में storage से ही आने वाले. Storage, backup, disaster recovery, migration. Major questions यहीं से आएंगे आपके. High availability, load balancer, disaster recovery, backup, storage. Okay, what is the next step? Anyone else other than Yogesh? I'm creating the storage account. What is the next step? Sanmitra? I want to create a file share. I have created a storage account. It is being created. What is the next step?
I'm not very clear. Sorry. No, that's okay. Joey, what is the next step? We will go to that storage account under data storage. We will go to file share. Yeah, right. File share. Okay, I hope it's clear. Next, इसके आगे इसकी कोई जरूरत नहीं है किसी को steps बताने की. I hope. Or do you guys still don't remember after this also? I mean, if you come till this screen, would you still require instructions, or will you be able to create one? Okay, Amit, I am looking for a 10 GB or a 5 GB wala file share. How do I do it? Okay, fine. I came here. I clicked on file share as you guys asked me to create storage account. You asked me to click on file share. I did that. I'm looking for a 10 GB wala file share, 10 or 5 GB. Next step, please. So after create a file share, if you click on the plus sign, give it a name, create it. Okay, what now? On the right hand side, if you see the 3 dots, from there we can edit the quota. Now, how do I share this with my users or with my end users where I want them to use this shared folder? For me, Yes, anyone. That's fine. Yes, Amit, how do I share this? Okay, Sanmitra, yes, how do I share it? You'll click on those 3 dots again. And connect. Okay. And then you have to use this. So it'll create that drive. So it'll create the Z drive with this. If it Windows, So code- this share Linux, this one Mac, this script. So I'll go for Windows. Let's say I want them to keep this as V drive or S drive. I copy this and then I give this link to my end users. They can simply go to their PowerShell and click on, just copy and paste that, and they should have this drive added. And we got some error. Can anyone read this error and let me know what is the issue? It is port 445 blocked by ISP. And how can we check? How can we check the Internet ports? storage. Anyone knows? How can we check the ports? telnet command. No, for using telnet, we can just check if it is open or not, but we cannot open it. But that's fine. Leave it. Guys. OS level ki troubleshooting is okay. That is not what you require. Firewall say we can Firewall say, enable. right. Leave it. So using this, you will have a network share here, a network drive here. याद आया आप लोगों को सबको? We did it in last time. If you guys remember, we did it last time. Anyone who doesn't recognize or remember it, कि याद नहीं आ रहा है that what did we do? Yes, guys. Anyone who doesn't understand this or who did not understand in this one, कि share drive होता कैसे है? Because we'll require share drive wala concept आगे भी. So please, anyone who did not understand, let me know, so I can troubleshoot on this, and then we'll try to figure it out. If not, we can leave it here. If you guys got the concept.
Yes, anyone who did not understand, please let me know. All of you got it? All of you understood it well? Yes. 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 Fine. Then we'll not troubleshoot on this one. What happens post this? यहाँ पर एक आपको ड्राइव आ जाता है, इसी तरह से एक ड्राइव दिखता है. You save your documents in that, but ultimately वो सेव होता है यहाँ पर. ठीक है? I'm not spending time on troubleshooting Windows वाली मशीन पे, because that is out of your scope. तो उसमें आप लोगों को वैसे ही कुछ करने की जरूरत नहीं है. But still, if you want to see, we can troubleshoot that. So this is what a shared drive is. This is a revision. We have already completed that. Now let's talk about backup. Okay. So we discussed file share. Okay. To understand backup, we will have to understand one more thing, which is volume shadow service. You do not need to understand this in detail. This volume shadow service, it is a component of Windows operating system. Let me open services and you should be able to see this. This is just good to know information, guys. इसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को focus की ज़रूरत नहीं है. अगर if you're not getting it, leave it. It is just background, so you understand के actual में होता क्या है जब ये शुरू होता है, बैकअप जब शुरू होता है तब एक्चुअल में होता क्या है. सो वॉल्यूम शैडो सर्विस, इन दिस केस दिस इज स्टॉप है, मैनुअल मोड में आई एम स्टार्टिंग दिस. वॉल्यूम शैडो कॉपी क्या करता है यहाँ पर, इफ यू रीड, इट हेल्प्स यू इन बैकअप. बाहर से आप कोई भी सर्विस यूज कर रहे हो बैकअप की, यू कुड यूज Azure, you could use नेट बैकअप, यू कुड यूज सम अदर थर्ड पार्टी वेंडर, किसी भी तरह का बैकअप आप यूज कर रहे हो, बट उसके लिए वॉल्यूम शैडो कॉपी जो विद इन एक इंटरनल सर्विस है विंडोज की, वो सर्विस जो है काफी हद तक हेल्प करती है. हाउ इट हेल्प्स, क्या क्या इसमें वो ये करती है, जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट वगैरह को सेव कर रहे हो, राइट, यू आर वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट, तो उसका एक लाइट वर्जन जो है वो अननोइंगली, मतलब यू डू नॉट सी दैट, एंड एज एन एंड यूजर वी डू नॉट सी इट, बट उसको वो सेव करता रहता है. वॉल्यूम शैडो सर्विस, वॉल्यूम शैडो कॉपी सर्विस, VSS इट इज कॉल्ड. तो VSS जो है वो उसको एक कॉपी बनाकर रखता है, एंड whenever the backup agent approaches, let's say let me open paint so you will be able to get it well. Is this clear? Should I delete this? Any questions on this diagram? Okay, so let's say this is your laptop. You are working here, you are working on some page, some Word file, some Excel file, and here is your backup vault or backup जहां पर भी आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है कि यहाँ से यहाँ पर मेरा बैकअप होना चाहिए. This is what you have configured. This is your laptop. This is your backup vault, you call it backup. इसको कुछ भी बोल सकते हो आप. Not talking about Azure, still not talking about Azure. When we come to Azure, we will use the exact terminologies जो Azure में होगी. ठीक है. So यहाँ पर आप किसी Word फाइल या Excel फाइल पे आप काम कर रहे हो. So what happens, ये बैकअप यहाँ से कोई अप्रोच करता है, ये जो भी बैकअप सोल्यूशन है आपका, लेट्स से सिमेंटेक है या नेट बैकअप है. नेट बैकअप का बैकअप सोल्यूशन है, नेट बैकअप एक प्रोडक्ट का नाम है, एक्चुअल में बैकअप का काम कर रहा है, या फिर सिमेंटेक है सपोज. ये यहाँ से जब अप्रोच करेगा बैकअप के लिए, यहाँ से इट विल अप्रोच कि यार इट वाज कॉन्फिगर्ड कि एवरी 16:40 4:40 पे बैकअप होना चाहिए डेली. सो दिस टाइम इट इज अप्रोचिंग टू दिस पीसी दैट आई वांट टू टेक बैकअप. अब यहाँ पर एक्चुअल में काम भी चल रहा है, यूजर्स एक्सेल पे भी काम कर रहा है, वर्ड पे भी काम कर रहा है. सो उस बैकअप में ये फाइल कोई क्रैश ना हो जाए या डेटा मिसमैच ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, इसलिए VSS क्या करता है, VSS इट्स एन इंटरनल सर्विस जो विंडोज की है, इसका एक सेपरेट कॉपी बनाकर ऑलरेडी यहाँ पर रखता है लैपटॉप में ही कहीं पर. ठीक है, यू डोंट नीड टू नो दैट कि किस फोल्डर में रखता है, वो हिडन फोल्डर्स क्या है, हाउ टू चेक देम. ये OS लेवल की ट्रबल शूटिंग है, यू डू नॉट नीड टू नो दैट एट ऑल. सो व्हेन बैकअप अप्रोचेस, वो यहीं से बैकअप पिक कर लेता है.
तो इससे क्या होता है, कोई डेटा करप्शन वगैरह का कोई इशू नहीं होता है. सो दैट्स ऑल अ VSS डज. मतलब इससे भी बहुत ज्यादा काम करता है VSS. बट आपके नॉलेज के लिए फिलहाल टू अंडरस्टैंड बैकअप, ये एक टर्म हमको जानना जरूरी है, VSS. ठीक है. सो दिस इज व्हाट VSS डज. नॉर्मली बैकअप वगैरह नहीं होता तो हम क्या करते हैं, VSS की सर्विस को आके रीस्टार्ट करते हैं. कि हमने अज्योर से तो बैकअप कर लिया है सपोज, या फिर नेट बैकअप से किया है, या कहीं से किया, सब कुछ सही चल रहा है हमारा जो है, एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन. और उस बैकअप में मेरे 10 कंप्यूटर्स है, सारे हो रहे हैं, एक ही कंप्यूटर नहीं हो रहा है. सो ऑन दैट पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यू विल गो एंड यू विल रीस्टार्ट द VSS अगेन. यू एज इन being an Azure administrator, it is not your job, you will not do this. ठीक है. आई एम जस्ट लेटिंग यू नो व्हाट हैपेंस. बट आप एनवायरनमेंट में अगर काम करते हो तो इतना पता चल ही जाता है. सो इफ यू गो टुमारो एंड क्लेम दैट आई हैव बीन वर्किंग इन Azure फ्रॉम 4 years, और आप बोलोगे VSS के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता है, सो इट इज नॉट गलेबल. Hence, I am telling you. Otherwise, this has nothing to do with our scope and with our course. Is it clear? Anyone who did not understand anything, any confusion? Yes, guys, anyone? Amit, Juhi, Srishti, Yogesh, Samitra, clear? No, clear. Yes. Ganesh? Clear, sir. Okay, fine. So we discussed VSS. Now, yes, Ganesh, are you asking something? Yeah, I'm asking, sir, like, this is my second day, okay? I've just recently joined. So, अब जो हम जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, ये बेसिकली आपकी जो मतलब ये जो बैच है अप्रैल की, ये आपने अप्रैल में जो स्टार्ट किया उसको कंटिन्यूस या फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करें एग्जैक्टली? नहीं, this one we are almost about to finish. ये last topics है हमारे. Okay, last topic से. हाँ, so maybe you can watch those videos which are there already Mhm. saved in the Google Drive. वहाँ पर Yes. scratch से है. So you will understand the rest of the topics. But I can continue here, right? Yes, yes, you can. You wish. Okay. Okay. Next thing to understand, next terminology to understand is system state backup. System state backup. Now, what is a system state backup? Let me show it to you very quickly. जब when we have a server में अपने आप में जो है ना बैकअप का ऑप्शन अवेलेबल होता है. सो ये जो मैं बैकअप बता रहा था, इसको हम बैकअप करके देखेंगे अब एक बार, और उससे पहले हम सिस्टम बैकअप भी देखते हैं. सो इफ आई एम यूजिंग अ सर्वर में इनबिल्ट बैकअप का भी ऑप्शन होता है. तो यहाँ पर जब मैं जाता हूँ कोई फीचर्स को ऐड करने, सो हियर आई कैन सी विंडोज सर्वर बैकअप इज देयर. सो आई एम यूजिंग विंडोज सर्वर बैकअप ऑप्शन जस्ट टू शो इट टू यू कि बैकअप दिखता कैसे है. ठीक है. एंड देन विल स्टार्ट विद Azure बैकअप. सो ये रोल्स इंस्टॉल होगा, मे बी माई सर्वर विल गेट रीस्टार्टेड. वैसे भी 1 मिनट हो रहा है. सो we'll see you in 5 minutes. 16:45 will join the call using same link. I'll have to restart this server once. Okay, same link in 5 minutes. 16:45 IST. Okay.